this live stream. How are you guys doing? And 7 Max 8, and we'll also be trying out the new 737 Max 8 that has just been released. So let's see how this aircraft is and how good is this aircraft. Hello aviation for life, how are you doing? Welcome to the live stream. Oliver, I'm going to use gate 09 at VOP. Sure, no problem. Let's see, we might do server 2. We'll see Phonic PG, whatever server is available, we'll do. Hello, hi Tyler, how are you doing? Welcome to the live stream. How are you? I got a surprise today. I love RFS. I'm coming. I will land. Akash bhai. We'll try to capture your landing on the A320 Neo. So let's go ahead and get started. Hello, hi, how are you doing? Farah, how are you? Welcome to the live stream. Alright, let's see. Let's join on event server 2. We can join on event server 2. Event server 2. And 737. Me and Anish bhai on finals. Okay, we'll try to capture it. Alright, that is our SpiceJet livery. Confirm, reset, confirm. And let's go to Chennai. Okay, let's take gate 29, and then you were going to take gate 9, Oliver. Hello, hi Glam, how are you doing? What's up? Welcome to the live stream. I'll take gate 2 at Port Blair then. Hello, Ghost 777, how are you? Welcome to the live stream. Do you remember me? My name was Best Gamer. Yes, I do remember you, Best Gamer. Yeah, you have changed the name. So, yeah, now that you mentioned that you are the same, you are Best Gamer. Now I do remember you. Okay, let's try to capture the landing for Anish Bhai and Captain Navraj, who are on their finals. Yep, what's up, Ghost 777? Oh, you guys are still 19-20 nautical miles south, so that's fine. Okay, who has spawned on top of me? Who just spawned on top of me? Can you please change the gate? कैप्टन सुबेश, मेरे ऊपर ही स्पॉन मार दिए. Yo, hello Scooby, what's up? थैंक यू सुबेश भाई. Alright, there is Oliver. Oliver is using the Air India Express livery. Nice. Actually भाई he was already there before you joined. अच्छा ऐसा है क्या? अरे सॉरी सुबेश भाई, सॉरी. फिर माई बैड है, सॉरी सुबेश भाई. यार मेरे मैप में नहीं दिखा रहा था स्कूबी उस टाइम पे यार. इट वॉज नॉट शोइंग ऑन माई मैप, इसलिए मैंने उधर स्पॉन मारा भाई.
सॉरी भाई, सॉरी सुबेश भाई, फिर दैट इज माई फॉल्ट है, सॉरी सर. यप. All right, there is Captain Anish and Captain Navraj. Chalo, let's capture the landing for both of them, and then we'll start with our loading process. Yeah, that's it. Even I was like कि मैं अकेला कैसे दिख रहा आपके स्ट्रीम में. एग्जैक्टली आप अकेले दिख रहे थे तो मैंने कर दिया उसके ऊपर वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं स्पॉन में. बोला कोई नहीं है, गेट खाली है. लुक्स लाइक अनीश भाई स्लीपिंग. अरे ये अनीश भाऊ. ओके, still 8 nautical miles for Captain Navraj to land. So let's continue with our uh, loading process. Let's at least start up our aircraft. I think Anish bhai was sleeping. Anish bhai just woke up. ज़्यादा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर थे वो. Alright, there is Captain DP as well. भाई कौन है गेट स्ट्रोब लगाकर? That is सुबेश भाई. भाई सॉरी a little late, no problem आकाश भाई, welcome. So what is the surprise that you have? I'm waiting for that surprise. Nice one, Phonic BG. Beautiful landing in the One World livery from Qantas. Very good. Okay, Scooby, go for it. Surprise is I got pro lol. Lol. अरे आकाश भाई, I already guessed that you will be having a pro today. That I already guessed it. Looking at your chat when you mentioned that I am going to join you. Okay भाई, come. Depart from runway 07. Depart from 07.
Depart from 07, then I will be able to capture you. So let's start with loading the passengers, cargo, fuel for our today's flight. Let's turn on the battery. Let's turn on the dome lights and nav lights. Let's turn on the APU and let's start preparing our aircraft. भाई मेरा लैंडिंग रिकॉर्ड करना भाई, अभी जल्दी आओगे तो रिकॉर्ड होगा अनिल भाई, आप लैंड करोगे तो होगा. वाई नॉट आकाश भाई? वेयर आर यू गोइंग? लुक्स लाइक अनीश भाई जस्ट वोक अप, है कि नहीं अनीश भाई? या सॉरी है भाई. सॉरी किस लिए भाई? क्या किया ऐसा कि तुमको सॉरी बोलना पड़ रहा है? फोनिक बीजी, अब ये मत बोलना कि मेरे गेट में तुम अरे रे 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 रे, सही में फोनिक बीजी मेरे ही गेट में पार्क कर रहा था. पता लग जाएगा, लग गया, पता लग जाएगा क्या? लग गया. Okay, we are done with loading the fuel, so let's send back the fuel truck. Let's start with our in-flight announcements. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Please take your seat and fasten your seatbelt. And also make sure your seat back and folding trays are in their full upright position. Perfect. If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in the event of an emergency, please ask a flight attendant to reseat you. करता हूँ मैं, करता हूँ, टेंशन मत लो, हो जाएगा रिकॉर्ड. Including the lavatories. Tampering with, disabling or destroying the lavatory smoke detectors is prohibited by law. If you have any questions about our flight today, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. अबे बहुत दूर हो यार अनीश भाई, आराम से. आई विल इजीली रिकॉर्ड इट, डोंट वरी अनीश भाई. यार ये A321 का स्टार्टअप, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अरे अनीश भाई ये क्या था?
So yeah, bhai, that's the reason. Okay, no problem. Enjoy. Have fun plane spotting, bhai. Have fun plane spotting. No problem. Okay, we are ready for our pushback. Cabin crew, prepare doors for departure and Let's cross prepare check. doors for departure. Ladies and gentlemen, And we can start with this our is your chief pushback. flight attendant. On behalf of our captain and the entire crew, welcome aboard. At this time, Hey, make that sure your seat aviationist, belts you are and literally tables are pushing set back in the upright into position and your seatbelt is correctly Scooby. fastened. Also, your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Brother, have Thank you. patience, please. Please be mindful. चलो स्कूबी भाई आ जाओ. Continue with your taxi. अरे कैसे हो प्रदीप भाई? वेलकम. क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद दिखे हो भाई आप. Beauty of SpiceJet, sir. Push fast, waiting for you, or should I go ahead? Go. Whoever is ready can start with the takeoff. Go and start your departure from 07. Depart from 07. यार भाई आप बहुत लेट आते हो, थोड़ा पहले आ जाया करो. ओके भाई चलो, थोड़ा पहले आने का कोशिश करता हूँ मैं. I will try, sir. स्कूबी भाई फिर पंगे ले रहे हो. A321 से देखा था ना, इसकी ब्रेक खत्म है. हाँ भाई पुश करो कुणाल भाई, आप मेरा बाद ही टेक ऑफ करना. अरे मैं अभी पुश बैक नहीं करूँगा भाई, मैंने पुश बैक किया तो मेरे को सबके लिए वैसे भी रुकना है. Yep, straight to TOC. Yep, that's what we will be doing. जाओ स्कूबी, टेक ऑफ करना है तो यू कैन डिपार्ट. अरे सही है भाई, सही है. ऑल द बेस्ट सर. होपफुली सर आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए. प्रदीप भाई, होपफुली विल क्लियर योर एग्ज़ाम्स. ऑल द बेस्ट. ठीक है फिर नॉल. यप. चलो start with your departures guys. Start with your departure. I got disconnected coming back. ओके आकाश भाई. ट्रेलर भाई 5 घंटे में आया, किस बात का? नाइन 9:30 तक आ जाया करो. कोशिश करता हूँ मैं. अरे निकलो यार स्कूबी भाई, क्या फर्क पड़ता है.
आ रहा है, लो ग्लैम आ रहा है, लो ग्लैम रास्ते में। फिर ये है, ये देखो 3 लोग हैं रास्ते में, एक के पीछे एक। जाओ, आ रहे 3 लोग आ रहे आपके लिए। Guys, you can depart out of runway 07. Depart out of runway 07. Okay. So I think that aviationist and Captain DP are going to depart out of 12. Chalo bhai, chalo. I am going to start with my pushback and let's go. No, let's wait for Oliver to complete his taxi, then I will start with my pushback. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Count the number मैं of इसीलिए मैंने बोला था कर लो टेक ऑफ, तब आप किए नहीं. sudden pressure loss. Stay calm and listen for instructions from the cabin crew. Oxygen masks will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose like this. Pull the strap to tighten it. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. Life rafts are located below your seats and emergency lighting will lead you to your closest exit and slide. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. Alright, let's start our engine number 1. Take a moment to review the safety data card I mean in the engine pocket 2 in front of you. is starting up. Sorry Oliver to keep you waiting for a little longer. अभी इतने देर से मैं रुका हुआ था स्कूबी भाई. अभी रुको जरा, 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं. हाँ करो करो, डिपार्ट करो. Beautiful departure for that. Flaps to 15 and I'm going to start my single engine taxi. Cabin lights to off. TCAS to traffic advisory. Okay, you guys can take the taxiway right here. I am going to go till the very end, so do not follow me.
I'm just going till the very end to make some space for everyone else. Alright, go for it, Glam. I'm ready to capture your takeoff. Alright, that is the departure for Croatia. And that is going to be Clam departing out of Chennai. Hello Arthur, how are you doing? Welcome to the live stream. Beautiful takeoff, Clam, beautiful departure. Alright, let's continue with our taxi. देखा मैंने भाई, देखा. Okay, Captain DP is departing as well. Let's quickly capture the departure for Captain DP, and then let's capture the departure for Akash, and then we are going to depart. Nice one, beautiful departure, Captain DP, beautiful takeoff. I fly in RFS, but sadly my sub ended, lol. No worries, join us whenever your subscription is active again. Cabin crew, prepare for takeoff. Alright Akash bhai, let's go. I am ready to capture your takeoff, so go for it now. Okay, TCAS to traffic advisory and resolution. Everything else is perfect. As soon as Akash bhai departs, let's prepare for takeoff. Yep, that aviationist, we saw you crash. I hope that you will be able to rejoin and take off again. Hello V1 Rotate, how are you doing? Welcome to the live stream. Beautiful takeoff, Akash bhai. Beautiful departure, beautiful takeoff. Okay, let's line up. Let's turn on the strobe lights. Let's line up and let's depart. Oh, before I do that, I could do this. Nice. Yes sir, exactly, इसीलिए मैं रुका हुआ था. Alright, landing lights on, strobe lights on, everything else is looking good. Alright, let's go ahead and let's depart out of Chennai. We are ready for departure.
Takeoff thrust is set to 80%. Airspeed is alive. Takeoff thrust set. 80 knots. Check. V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Alright, nice one. Beautiful departure. Beautiful takeoff out of Chennai. Passing 1500 feet. Flaps up. Yep, exactly why. Passing 2500 feet, flaps 5. Flaps up. Look at that, Oliver's departure out of Chennai. Nice, nice Oliver, nice. Tomorrow's probable route. Tomorrow we will be doing the Airbus Beluga. Tomorrow's probable route is Airbus Beluga. That is the probable route for tomorrow. Airbus Beluga is what we are going to do, sir. लाइव स्ट्रीम भी चालू है. Yes. अरे भाई लोग, did anyone notice that we actually lifted off a bit and then touched down again on the runway before the takeoff? Port Blair has a special place in my heart. Visited there for vacations. Nice. How was your experience, Scooby bhai? When you traveled to Port Blair, how was your experience? Yeah, yep. So now I just hope that there was no tail strike because of that. So that was hard takeoff. That was not a hard takeoff but a smooth landing before takeoff. That was a smooth landing before takeoff.
There is an air show going on at Trivandrum Indian Navy. I saw a PA-9 napkin of the Indian Navy, and then I spotted Hindustan 7478 and three helicopters. Then the air show is in December 3rd or 4th. Nice. Akash bhai, you just uploaded something. Let me see. Is that the same video of what you just spotted? Tomorrow Lukla A380. Congratulations Phonic BG, all the best. I hope you succeed in your mission of Lukla A380. Andaman is just beautiful. It feels like you are in a foreign place, just like Bali, etc. बस भाई, तो नेक्स्ट टाइम आई कम टू इंडिया आई एम गोइंग टू अंडमान. बाकी सब बाद में देखेंगे अपन. Nice Akash bhai, very good. And also we will see ships, planes, helicopters of Indian Navy with formation flights. And wow, Akash bhai, nice. Capture everything and share it with us. We would also like to see your plane spotting experience. It's best to visit with family. यार फैमिली छोड़ो ना भाई. और एज अ कपल ठीक है, वो भी हो जाएगा. मुझे ना बोलो ऑल द बेस्ट. आई मीन कल की लाइव मैं नहीं कर रहा ये सब स्टैंड बाय लाइव स्ट्रीम पे. कल टुमारो वी विल बी फ्लाइंग द बेलुगा, एयरबस बेलुगा फ्रॉम टुलूस to Paris. So tomorrow we will be flying the Beluga from France to Paris. That is the flight for tomorrow, bhai. Apart from that, I am not going to do any stunts. Yeah, bhai, first and second videos are all that. Okay, bhai, I will see. टुडू से चार्ल्स हो, चार्ली नहीं है. फोनिक बीजी चार्ल्स हो, चार्ल्स. बट यस, फ्रॉम टुलू टू चार्ल्स. Alright, that is Oliver, that is Phonic BG, that is Subesh, that is Anish, that is Tyler Z Gaming. Nice. So everyone is in the air now. Beautiful. Alright, passing 10,000 feet, let's turn off the seatbelt signs and landing lights. Nice. Did you spot that one as well, Akash bhai? Anish bhai just came in the chat to say bro spot me, then he left. वो सेम नहीं है भाई, और राइम. हाँ, बात तो सही है फोनिक बीजी. चलो, today I will try to capture everyone's landing here then. I think Oliver just overtook me, but I can capture landing for Navraj,
for Subesh, for Anish, for Tyler Z Gaming, and then Akash holds, of course. So nice. Today we'll be able to capture a lot more landings than takeoffs, which we usually do. We'll go what do you call it, against the standard operating procedures today of capturing the landings. Alright, so let's see who all are flying with us today. On our today's flight, leading the pack is Scooby, just passing TOC. Then we have Glam. Then there is Captain DP. Then we have Akash. Then there is Oliver. Then there is Captain Navraj. Then there is Captain Subesh, Tyler Z Gamers, and Captain Anish. So that is everyone who is flying with us today. Nice, yes. Monikji, how is the weather in Calgary? Scooby, you will win today's race. Yes, Scooby is going to win the race today. That is exactly why he was the first one to depart. He is like, today I will not give chances to anyone else. Oh wow, that is cold, bro. That is cold. मजे आ रहे. Certainly, sir. Certainly. Have fun. Enjoy. Alright. Let's change the view. स्कूबी पता नहीं है. अनीश भाई फॉर्म में आ सकते हैं. अनीश भाई भी लाइक ऐसे कैसे स्कूबी जीतेगा. मैं आ रहा हूँ. hello Arpit bhai, how are you doing? Welcome to the live stream. Thank you, brother. Thank you. Yes, just like Arpit bhai, I would suggest, I would request everyone to please like the live stream. Do not forget to leave a like on the live stream. Let's aim for 30 likes on our today's flight. कितनी स्पीड चला रहा है? स्पीड अभी कितना चल रहा है? 250 करीब 270 नॉट्स अर्पित भाई.
नहीं यार 280 के ऊपर अभी तो ऑलमोस्ट 280 नॉट सरप्रीत भाई. Alright, there is Oliver. Let's try to capture the formation flying from Oliver. There is Captain Navraj right behind us. And I saw Oliver was somewhere here as well. Oh, there he is. Almost at 25,000 feet. So let's try to capture Oliver. There is Oliver. Okay, yep. Okay, in the middle. You know, gotta be ready. Train leaves at 4 a.m. Sure, no problem, brother. No problem, Akash bhai. Alright, that is Oliver. भाई पैसेंजर्स व्यू करो. पैसेंजर व्यू करते सर. भाई नहीं दिख रहा यार. ये लो पैसेंजर व्यू अनीश भाई. That is the passenger's view for you, Anish bhai. ओके अनीश भाई बोलो क्या करना है. आई एम डिस्कनेक्टेड. ओ माई गॉड. वन टाइम when Scooby was in the lead he gets disconnected. Perfect. Beautiful. In short Scooby you RFS तुमको जीतने देना नहीं चाहता बस. मजा आ गया. अनीश भाई लाइक यस फाइनली. अरे यार अनीश भाई इतना क्यों एक साथ स्पैम मार रहे हो. इसीलिए स्ट्रीम एलिमेंट्स ने म्यूट कर दिया. अरे इतना इमोजी मत डालो अनीश भाई एक साथ. बस 1 2 3 इमोजी डालो. भावनाएं पहुंचनी चाहिए सर. अनीश भाई पे 10 रुपीज टू रोटो इस डिस्कनेक्ट स्कूबी. अरे सुपर चैट थोड़ी कर सकते भाई गेम में. आकाश भाई इज लाइक अनीश भाई डिड अ सुपर चैट. हाँ अनीश भाई डिड अ सुपर चैट टू रोटो इस डिस्कनेक्ट स्कूबी. 10 रुपीज सुपर चैट. Anish bhai got so excited that he accidentally shared a bit too many on the emojis.
सारा मूड खराब कर दिया। अरे कोई नहीं स्कूबी भाई, आप डिस्कनेक्ट हो गए फिर भी आप फ्लाइट कंप्लीट करो। हम मान लेंगे कि आप ही लैंड किए, आप ही जीते हो बस। वो तो फरवरी में फोन दीजिए, अभी तो बहुत टाइम है। एक 5 मिनट देना भाई, मैं कॉफ़ी बना के लेके आता हूँ। ओके ऑल राइट, आई एम बैक। कितना साल की होगी बर्थ भाई? 2 साल, 2 साल होंगे सर, 2 साल। इट विल बी 2 years स्कूबी भाई। 2 साल हो गए चैनल को। इन February 2026 इट विल बी 2 years। All right, there is Navraj. I know Oliver is somewhere here. Where is Oliver? Oh, there you are, Oliver. Nice. Okay, let me change the view a bit. Nice, Oliver.
चलो मैं 10 RFS सब्सक्राइबर्स को, अरे 10 RFS सब्सक्राइबर्स को दोगे कैसे फोनिक बीजी? हाँ, but yeah, that is something that we can think of. Maybe not 10 subscriptions to subscribers, but I will do some giveaway. I will definitely do some giveaway, that is for sure. नहीं दूंगा, सुबेश भाई देंगे एंड आकाश भाई एंड स्कूबी भाई अनीश भाई सब देंगे फोनिक बीजी. सुबेश भाई, अनीश भाई, आकाश भाई, everyone will give. Very good, very good. Scooby भाई, when we reach R001 waypoint, you join from Phuket. Yes, do that. नहीं तुम सब दोगे. हाँ, फोनिक बीजी ने मस्त बॉम्ब फोड़ा. 10 सब्सक्राइबर्स को 10 सब्सक्रिप्शंस ऑफ RFS Pro, but that will be from सुबेश, अनीश, स्कूबी. वाह क्या बात है भाई. आप एरोफ्लाई FS ग्लोबल गेम खेलो, मस्त ग्राफिक्स, ट्रैफिक भी मस्त गेम है. मेरे को बट खेलने नहीं आता है भाई. मैं फ्री में क्या गूगल से भाई मैं मेरे पास वो गेम क्या बोलते हैं ना, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है वो गेम ट्राई आउट करने का. अभी फ़िलहाल के लिए मैं आई एम वर्किंग ऑन इनफाइनाइट फ्लाइट अर्पित भाई. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इनफाइनाइट फ्लाइट. फर्स्ट आई वांट टू लर्न इनफाइनाइट फ्लाइट. once that is done, then I might try out Aerosfly FS Global as well. Slowly and steadily everything will come to the channel, but first priority is to try out this thing, what do you call it, as infinite flight. करो सर करो भाई. I can barely afford one subscription. Akash bhai, you graduate, you start working in maybe IT, or maybe you start working as a pilot, then you will be able to afford 10 subscriptions. Don't worry. How can I give $10? Don't worry Akash bhai. कुणाल भाई तुम्हारा ग्राउंड स्पीड कितना है? 458 नॉट्स. अनीश भाई 458 नॉट्स. पता है मेरे को, पता है अर्पित भाई, मैंने देखा हुआ है कि वो MSFS है. इट इज़ एन MSFS ऑफ मोबाइल फ्लाइट सिमुलेशन. आई नो दैट अर्पित भाई. उसका करेंगे अपन. जो डिमांड है वो हाँ, और फिलहाल के लिए जो डिमांड है वो इन्फिनिट फ्लाइट का ज़्यादा है, तो इसलिए अभी मेरा फोकस इन्फिनिट फ्लाइट पे है. तो उसके बाद में मैं आऊँगा, इसके ऊपर भी आऊँगा, एरोफ्लाई पे भी आऊँगा, टेंशन मत लो. हाँ, एरोफ्लाई इज गेटिंग मल्टीप्लेयर इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड. इफ इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लेयर देन दैट इज़ परफेक्ट. That is exactly what we want. Estimated time of arrival है भाई अनीश भाई. बट दैट इज़ माई फॉल्ट. मैं कम चीज़ों से संतुष्ट नहीं था, सो आई डिड ऑल सेटिंग्स. मैक्स कॉट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, बट डिडेंट न्यू वॉट वॉज कमिंग नेक्स्ट. अरे रे हैपन्स भाई स्कूबी, हैपन्स. बट एटलीस्ट यू एन्जॉयड योर टाइम. दैट
what is more important. हाँ भाई, yep. It is important to enjoy rather than क्या बोलते हैं ना कि अरे you know you lost your GPU is fired. Yes, GPU might be. अरे ये फोनिक बीजी करे. Oh wow, 6,000 feet, same as my height, and then that's me. Nice. Beautiful. Alright, let's offer some meals to our passengers now that we are reaching our cruising altitude. Arrival time 1 hour and 20 minutes, Anish bhai. 1 hour and 20 minutes. Yeah, did enjoyed MSFS, but yeah, did enjoyed MSFS is a beauty. Absolutely bhai, absolutely. आप इनफाइनाइट फ्लाइट सिम को बात कर रहे हो क्या? खेलोगे? मस्त है ये भाई. यस भाई, इनफाइनाइट फ्लाइट सिम का ही बात कर रहा हूँ. IFS वो भी खेलना है मेरे को. वो खेलूँगा अभी. मैंने इंस्टॉल कर दिया उसको. अभी लर्निंग इन प्रोग्रेस है वो. इनफाइनाइट फ्लाइट सिमुलेटर मेरा लर्निंग इन प्रोग्रेस है. एक बार वो हो जाएगा तो फिर चालू कर दूंगा मैं वो खेलना. ओके. आई वाज एट 37K में फॉल कैसे हो गया? अब हमको कैसे, क्या पता भाई, ऐसा क्या किया तुमने? व्हाट डू यू मीन? स्टार्ट में क्या दिक्कत होता है अर्पित भाई? एक्सरसाइज करो जल्दी. हाँ भाई दिला एक्सरसाइज करता हूँ. अच्छा ट्राय कर दो. એનાથી શું થાય? એનાથી શું થાય? મસ્ત બેન કે પીછે ખબર પડે તમને. આમ કઈને આગળ એ કરવાનું. હા હા પાછળ એક પછી લઈ લેવાનું. પછી એક થવાનું. અચ્છા થઈ ગયા તમે જલ્દી સ્પીડ ના થઈ ગયો તો તમારે પ્રોબ્લેમ છે. બેકમાં તાકાત નહીં તમારે. ઓ ચાલો આપણે અત્યારે જ ટ્રાય કરીએ. હા તો કંઈક નવું ખબર પડી. तो फोनिक मुझे नहीं तो फोन. अच्छा ओके ठीक है. भगवान जाने. अरे फोनिक बीजी तुमने VS माइनस पे डाल के तुम भाग गए रहोगे, इसीलिए तुम फॉल हो गए. चलो આવી રીતના આમ કરવાનું બરાબર. આમ ને હવે આમ સ્ટ્રેટ થઈ જાય. કેમ? ઉસી को ले लो. હા આમ આમ આ બાજુથી આમ થોડું આગળ ધકેલો તમારે. આમ આટલું પાછળ લઈ લો. પતી ગયું, પરવારી ગયું. ઓટોમેટિક ઊભો જ થઈ જાવ. એટલું નહીં થાય ના. एक्सरसाइज तो खासी जरूरी है हमारा. I am disconnected. What happened, Oliver? Okay, no worries. Complete the flight still. One by one soldiers are falling. Yes, today one by one everyone is getting disconnected.
ओके अनीश भाई, ओके। गॉट इट सर। भाई क्यों लैग हो रहा है क्या पता भाई, होता है अपना लाइव स्ट्रीम ऐसे ही चलता है, लैग हो के ही चलता है। सॉरी। विच पोस्ट? पीछे देखो, पीछे तो देखो। अभी रुको देखता हूँ मैं। यस दैट इज फोनिक बीजी। किधर गए? हाँ ये रहा फोनिक बीजी। Be right back. Brushing teeth. Okay. Enjoy. अच्छा कमेंट्स में पीछे देखो भाई, मुझे भी देखो पीछे से, फ्रंट कैम करो। अरे अनीश भाई अभी आप काफी दूर हो, पास आ जाओ फोनिक बीजी की तरफ, फिर देखता हूँ मैं। फोनिक। नहीं अच्छा भाई यार, ठीक है मतलब अर्पित भाई, मज़ा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अभी वो डिपेंड करता है। बट पता नहीं मतलब मज़ा आ भी सकता है आपको, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है।
भाई बताओ, दोबारा बताओ, मेरे को नहीं समझा। स्कूबी भाई क्या बोला आपने, क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं समझा। तो अभी आपको दोबारा बताना पड़ेगा। नेटवर्क इश्यूज़ है भाई आपका शायद। हाँ भाई, अभी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यो यो, हेलो हेलो ऋषि भाई, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रदर, हाउ आर यू? हाँ भाई, लेकिन 15 नॉटिकल माइल पीछे हो भाई। I'm doing good as well. I'm doing good as well. Richie bhai, I'm just here after buttering in RFS. Nice, nice, beautiful. What was your landing rate? They are making chaos out there. तो उस पोस्ट के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था, पीछे तो देखो। एक 5 मिनट दो मेरे को। हेलो हेलो हमजा गेमर, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। RFS नहीं भाई, IFS। अच्छा, इन्फिनिट फ्लाइट सिमुलेटर में बटर करके आएगा, क्या बात है भाई, क्या बात है। अब उसका तो कुछ नहीं कर सकता अनीज भाई, वो तो है ही इन्फिनिट फ्लाइट में। अरे वो तो है ही 737 में भाई, वो वेव तो करता ही है अपना। मे बी समथिंग बिटवीन -40 to -50। नाइस नाइस, ब्यूटिफुल 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 भाई। ये इश्यू फिक्स ही नहीं हुआ है, तो वही तो मैंने बोला था ना भाई, जब मैंने अपडेट वीडियो निकाला था अनीश भाई, कि ये इश्यू फिक्स नहीं हुआ है वेव पैटर्न वाला। बस वो कॉकपिट का इंटीरियर वो लोग ने अपडेट किया हुआ है, बाकी वो और कुछ फिक्स नहीं किया वो लोग ने। थैंक यू, अरे वेलकम वेलकम ब्रदर। डिस्कॉर्ड पे पोस्ट भैया, देखता हूँ मैं। लेजी भाई अलग लेवल पे है।
कल भी लाइव करोगे क्या भाई? यस भाई, कल भी लाइव करेंगे. टुमारो वी विल बी फ्लाइंग आउट ऑफ टुलूस एंड विल बी गोइंग टू पेरिस, चार्ल्स टिगोल. ऋषि भाई तुम यहाँ, हेलो 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 एम के भाई, वेलकम वेलकम सर, वेलकम. आपके लाइव के बाद यहाँ. अच्छा कुणाल भाई, प्रदीप भाई आज आए थे ना स्ट्रीम में? यस आए थे आज प्रदीप भाई स्ट्रीम में. यप, मिल के गए, हाय हेलो बोल के गए मेरे को. यस, he did comment to say hi hello. I think the new 737 is so nice. Yep, Arthur, the new 737 is nice. The detailing has been improved a lot more on the detailing from inside the cockpit and all of that, but they still have not worked on the wave pattern. I mean, they have also changed look. All of this is good, a lot better than what it used to be, but could be more better with some improvements on that wave pattern or the wave motion that the aircraft enters in. Bye Kunal bhai, I got to go. Okay, no problem Rishi bhai, no problem. We'll see you tomorrow. Hopefully you will be able to join us tomorrow. मैंने बोला था उन्हें तुम्हें कुणाल भाई याद कर रहे थे. अरे क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू. इसीलिए प्रदीप भाई आए थे आज. बट वन थिंग इज, why did Boeing make the engines so close to the ground? That only Boeing can answer. Yep, hopefully I will be there tomorrow flying with you. Yes, hope to see you tomorrow bhai, hope to see you tomorrow. Chalo, let's go back to the outside view. I think Anish bhai should be here. He should be close now. So let's try to capture him. Yep, there is Captain Anish. Arey, so that way I can also capture Captain Anish. Bas, perfect. Yes bro, same issue with A330-200 in RFS. The engines are so close. Yep, lol, so true. Only Boeing. Yep, exactly. But they actually, right now the engines are mounted at a slightly higher position. But I think what I heard that in the past it was extremely close to the ground. Then everyone was like it will be very difficult for pilots to adapt between Boeing and Airbus aircraft. So the pilots who fly the Boeing won't be able to fly the Airbus aircrafts or the A320s. So closer to the wings. Otherwise, they were a lot more closer to the ground than what they currently are. So I assume how close they would really be. I just wonder how close.
I think A320 engines are a bit higher to the ground than the 737. Yes, absolutely they are. भाई मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए प्रिज्म लाइव कैसा रहेगा? भाई मैं वही यूज़ करता हूँ. अच्छा एप्लीकेशन है, बढ़िया एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है. હોટેલ્સ નથી. ત્યાં આગળ સ્ટારબક્સ અને ડંકિન ડોનટ્સ છે અને ટીમ હોટેલ્સ રેરલી અને ટીમ હોટેલ્સ ને સ્ટારબક્સ છે અને ડંકિન ડોનટ્સ રેરલી. Wait, did you turn on the TCAS off? No, I did not turn off the TCAS. The TCAS is like, okay, fine, I know that this guy is flying close to you, so there is no need to now, keep on giving you a warning every time. Wait, yep. So it's like TCAS is now accustomed to seeing this aircraft close to me. Resolution stable रहता है ना इस टाइम. हाँ, resolution stable रहता है. Yep, the resolution is stable. Nice screenshots like this would have been awesome with that plane near you. I have already taken some screenshots, Arthur. I have already done that. I would be sharing those on the Discord server later on. But since you have mentioned it, I will take a few more. इंडिया में A320 सीरीज का प्लेन बंद था कुछ टाइम के लिए. मेंटेनेंस का इश्यू था, टेक्निकल प्रॉब्लम था. यस, देयर इज अ नेशन वाइड टेक्निकल इश्यू विथ A320. दे नीड एन अपडेट. They need to update their softwares and systems. Try using the vertical speed settings on the autopilot to 0 feet per minute for flying in formation and not swimming. That's fine. I think Navraj can do that. क्या कहना चाहते हो फोनिक बीजी? What exactly are you trying to say here? उधर स्नोफॉल हो रहा है क्या? कुणाल भाई ठंड कैसा है? नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा. देयर इज नो स्नोफॉल हियर, बट इट इज कोल्ड. Give me a minute. I mean you both. Okay. अरे that is fine. Phonic BG. अरे Oliver. I think that is fine. Because if I turn, we will enjoy this roller coaster ride. भाई टोरंटो में किधर रहते हो? नॉर्थ यॉर्क. नॉर्थ यॉर्क में रहता हूँ भाई, नॉर्थ यॉर्क.
आ, भाई ऐसे ही व्यू रख दो कुछ टाइम में, मैं भी आ जाऊंगा। ओके ओके, श्योर 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 अनीश भाई, नो प्रॉब्लम। अच्छा एल्गोरिदम, अभी तो उसका कुछ नहीं कर सकते फोन बिजी, जो है वो है। आ, नो नो नो, आई डोंट लिव क्लोज टू एनी म्यूजियम भाई, नो म्यूजियम, नहीं नहीं नहीं। पहली बार मैंने सुना ये वाला नाम तो भाई म्यूजियम का। ये कौन सा म्यूजियम है भाई? अरे फोनिक भी जी, इतनी जल्दी कैसे बाहर मानोगे तो कैसे काम चलेगा? જેવું તો જતા આવજો મને તો વાર લાગશે ને એક જ છે. હા હા, આપણે કંઈક ચૂંટણી છે પતા પછી જઈએ. હા પણ નવથી તમે જતા હો એમ ચૂંટણી છે જ આપણી પાસે. મારે જવાનું તો આ પતા ને પછી જઈએ આપણે. Okay, let's see. फ्लैंगडोंग पार्क का नाम नहीं सुना क्या? नहीं भाई, नहीं सुना अनीश भाई मैंने। नो कुणाल भाई, कल आता हूँ, आज नींद आ रही है खतरनाक वाली। गुड नाइट ब्रदर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एम के भाई, गुड नाइट। कल कल मिलते हैं सर, हैव अ गुड नाइट। भाई ऐसा होता रहा तो खत्म ही है खेल। 11K फॉलोअर्स एंड 700 व्यूज, ये तो बेकार। अरे होएगा यार फोनिक बीजी, गिव इट अ टाइम, गिव इट एटलीस्ट 20 आवर्स 24 आवर्स, फिर देखो ना क्या होता है, कैसे होता है, कितने व्यूज आते हैं, क्या चल रहा है। गिव इट सम टाइम। ओके, आई थिंक समवन આપણે ચિંગમ ખાધી ને, ચિંગમ ખાયા પછી હવે જઈએ ને આપણે, આમ મારું પતે. હા માઇનસ હશે, માઇનસ હશે. शेरवुड पार्क, अरे कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आ रहे हो भाई अनीश भाई?
आपको क्या मेरा एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए क्या कुणाल भाई? वेर एग्जैक्टली डू यू स्टे इन नॉर्थ यॉर्क? ऐसा मैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देने वाला हूँ। अनिल भाई तीर मार दो हवा में कहीं तो कुछ तो लग जाए। 24 आवर्स बाद 1K जाएगा। अभी सर वो तो अभी देखो जो है वो है। All right, let's change this thing to this. Now let's enjoy this. बिल्कुल बिल्कुल, एकदम घर के बाजू में ही हो तो। अनीश भाई ने सर्च मारा होगा बेस्ट प्लेसेस इन टोरंटो, मेरे को भी वही लग रहा है। अनीश भाई इज सर्चिंग बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन टोरंटो, प्लेसेस टू विजिट इन टोरंटो। कुणाल भाई एनीवेयर क्लोजर टू दिस, एनीवेयर क्लोज टू दिस, एनीवेयर क्लोजर टू दिस। हाँ ये वाला लोकेशन के पास में हो कुणाल भाई, आप समझ गया मेरे को। ठीक है भाई, फिर मैं रॉजर स्टेडियम आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने बजे लाइव एंड होगा? देखो अभी 45 मिनट्स का फ्लाइट बचा हुआ है, उसके बाद में 15-20 मिनट लगेगा सबको लैंडिंग कैप्चर करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली और 1.5 आवर के आसपास लगेगा लाइव ख़त्म होने में। यप सॉरी। गए हो कभी रॉजर स्टेडियम? नहीं भाई, ऐसा कोई मैच हुआ ही नहीं है जो मेरे को देखने का मन किया हो, तो नहीं, आई हैव नॉट बिन देयर। बादलों में कुछ नहीं दिख रहा भाई अनीश भाई, बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। यस सर, नाम भी सुना, उसके कारनामे भी सुने, बट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स आई वाज अनएबल टू स्पॉट एनीथिंग। ओह नाइस, बट यार दिस थैंक्सगिविंग इट वाज रियली क्लाउडी एंड विंडी प्लस
सम स्नो, तो आई डोंट थिंक सो कुछ हुआ रहेगा इतना. अप्रोच के टाइम पे दिखे ना बस, फिर तो स्पॉट कर लेंगे अपन, टेंशन नॉट. फिर तो तुम्हारा भाई स्पॉट करेगा. ई स्पॉटिंग विल बी डन. ऑल राइट. हाँ वही. दिस टाइम इट वाजंट देयर. अरे phonic BG, remind me on this thing. If I use if I download RFS on two different devices, tablet and my phone, and then I start a flight on my tablet, so then I won't be able to turn on anything on my phone. If I turn on the RFS on my phone, then I will lose all the flight points in multiplayer that I have been flying on my tablet. बराबर है? Am I correct? phonic BG. Yes, because of here this one, right? ये वाला छोटा सा डॉट. Close to land but still far from the land. हाँ yes. ठीक है. अरे क्योंकि कैसा ना phonic BG, आई हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट टुडे, तो आई वाज थिंकिंग कि आई विल पुट अ फ्लाइट ऑन माय टैबलेट. आई विल स्टार्ट माय फ्लाइट लाइक अराउंड as soon as not as soon as I finish this, because I have to record a couple of videos as well. So not as soon as I finish this, but I was thinking कि I will start a flight on my laptop after completing my recording the videos. I will start a flight on the tablet. I will put it for some 6, 7, 8 hours. After I return from the restaurant, I will try to land the aircraft, है कि नहीं? And then I will start a flight on my phone. So it will give me like 16, 17 hours of total flying in total. तो वैसा वो सोच रहा था मैं. Yes, वो है. हाँ भाई, RFS Pro subscription is worth. Yes, it is worth it if you want to fly. Like it depends. Gaming with Raj. If you want an experience like MSFS, then a subscription of Aerosfly FS Global is worth it. If you want interactive cockpit, if you want all of that, then it is what do you call it as Aerosfly FS Global is worth it. Apart from that, I would say RFS is worth it because it gives a really good animation of snow effect, rain effect, sunset, sunrise effect. Plus there are like 50 plus aircrafts to choose from, and almost 700, 800 HD airports around the world that you can fly with. You can also use real world KML flight plans or real world flight plans on RFS. So yeah, all in all, it is worth it. But it is a game that is good for beginners as well as for someone who just wants to fly. Now it depends on that kind of realism and things that you are looking for. हाँ थोड़ा दूर देखा, समझ गया मेरे को.
अनीश भाई समझ गया. अरे अर्पित भाई हु? यस आई एम बैक. सॉरी फॉर बीइंग लेट. अरे नो प्रॉब्लम आकाश भाई, आई कम बैक. हाँ भाई वो बढ़िया है. वो वही मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कैसा है ना, बिकॉज फोनिक बीजी हैव टू गो टू वर्क एट रेस्टोरेंट, तो आई वोंट बी एबल टू डू लाइक अ 16 hour flight. I have done a 9 hour flight yesterday night. Right now we are doing 2 hours of flight. Then I will record some videos. After that I will start at least 7 hour flight and then a 9 hour flight. So it will total out to somewhere around 18 plus 7 would be 25 plus 2 is 27 plus 2 hours of flight would be 29 and plus 2 more live streams. No, not 2 more, plus 1 more live stream. So somewhere around 31 to 32 hours of flight I will be able to do it. I will do that then. When you activate VS while having either VNAV or altitude to engage, when the VS gets disconnected when reaching the altitude set, so when you are trying to use VS you need to first deactivate VNAV because because you are already at the altitude set in the VNAV. Yep. टैबलेट पे RFS को रिफ्रेश करके बंद कर देना, फुल्ली क्लोज. यस. तो आज वो मेंबर्स नहीं होगा. नहीं आज नहीं होगा, आज मेरे को रेस्टोरेंट पे जाने का, तो मेंबर्स कल होगा. आई विल बी डूइंग इट ऑन मंडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग. दैट इज़ व्हेन आई विल बी डूइंग द मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम. Hey, but I will join the voice when I am free at airport tomorrow a full day. I might come back before 10:30 p.m. Indian time so I can join tomorrow's flight. Yep, you can join tomorrow's flight. Akash, right? There is no members only live stream on Sunday morning for you. The members only live stream is going to be Monday morning India time and Sunday evening US time. That is when we are going to do the members only live stream. Okay. And Oliver, thank you for the feedback. Yep, I understood what you mean to say, but the reason why I am not doing it is because it is too much of an effort right now. भाई केवल अच्छा ये बताओ, बिना प्रो में 2 एयरपोर्ट गेट है ना, मुंबई एंड दिल्ली? Yes, I think Mumbai you should be able to get gates at Mumbai airport. I am not sure about Delhi airport, but I think you should be able to get a gate at Mumbai and Delhi airport. I am not really sure. भाई तुम्हारा को पायलट का मुंह दिखाई क्यों नहीं, मुंह क्यों नहीं दिख रहा? अभी दिखाता हूँ अनीश भाई, कॉकपिट के अंदर जाके. Brother, thanks for sharing your views. But bro, this game is took the real time, as in real life that's so much of time as works. Could you please share the tips you follow about time management? The only thing that whether you fly on this particular simulator or you fly on Infinite Flight or you fly on Aerosfly FS Global, it is going to take real life time. Okay, so I just turn on the game and I do other things. I will do my work, I will do my studies, assignments, whatever it is, I will do that. I will just keep the game running in the on my phone on the side. I will just look at the game when I have to land or take off. Oh okay, then I have time until December 3-4 when I go to see plane spotting, so I can join. Lol, I got 2 times. Nice, yes. Oh अच्छा, yep. इंडिया में केवल गेट है 2. Yep. Okay. Have a safe landing, स्कूबी भाई. भाई एक बार जूम करके स्पॉट करो. करता हूँ अनीश भाई, करता हूँ. हाँ कैप्टन नवराज, एयर इंडिया एक्सप्रेस. ओए हाय 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 हाय, नाइस.
हाँ, that is Captain Anish. जूम करके देख रहा हूँ. अनीश भाई इज इन इंडिगो 6E. ओके, थैंक यू ब्रदर. नो प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम. यू आर वेलकम. भाई आप स्टडी करते हो क्या? नहीं नहीं भाई, मैं जॉब करता हूँ. मैं आईटी में जॉब करता हूँ भाई. नाइस अनीश भाई, नाइस. आई हैव स्पॉटेड यू. I shall be ATC at Port Blair. Possible will take off from VOTX. No problem. Be an ATC, Scooby. Be an ATC at the airport. Anyways, we haven't had anyone provide us ATC services for a very very long time. So I think you can be the ATC. That would be a really good thing if you can be an ATC. अरे क्या बात है आकाश भाई, ब्यूटीफुल, परफेक्ट हिंदी बोला आकाश भाई. यू हैव सेड परफेक्ट हिंदी. परफेक्ट आकाश भाई, परफेक्ट. चलो आई विल शो यू द कॉकपिट ऑल्सो. ये देखो अनीश भाई, दिस इज माई को पायलट. अच्छा, ओके ओके. यप. Very good, very good. Akash bhai, you are learning the ropes. Beautiful weather in Port Blair. Nice, nice. Let's hope for a beautiful landing as well. Anish bhai is disappointed in the co-pilot. Guys, watch out. We might fly over North Sentinel. Yes, we will be flying over that. Anish bhai just mentioned it. इतने desperate हो. I can see the disappointment on Anish bhai's face. Anish bhai is like, अरे यार, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया. कोई नहीं अनीश भाई, कल चेंज करके लेके आता हूँ को पायलट को. टेंशन नॉट. मला फेंक दिया इंजन ने. Still you managed to survive it, huh? अरे पहुंचा नहीं ना इंजन तक, इसलिए. तब आपको कैसे पता चला कि भाला फेंक के मारा? તમારા કેળું ખાવા માટે ગયું છે કે ઉપર ચડાવવા માટે ગયું? કેળું બન્યો. ના તો હજુ 1 કલાક લાગે. 3 વાગે. તમારે કેટલા વાગે જવાનું છે? 5 વાગે ને?
काय કેટલા વાગે જવાનું છે અરે વહેલું હા અને 3 વાગે કે 2 વાગે હા ભાઈ 6 વાગે वो तो ठीक है केबिन क्रू ने बताया अच्छा फिर ठीक है they will throw arrows thinking we are loud roaring flock of dragons because we are not like one plane we have a lot nice आकाश भाई nice good one मैंने फिर फ्यूल फेंक दिया अब टपक टपक कर रहा है नीचे वेरी गुड फोनिक बीजी वेरी गुड भाई अच्छा था ये बढ़िया था भाई ये बढ़िया था स्कूबी वो लोग ने गेम ऑफ थ्रोन्स थोड़ी देखा गुड वन Okay guys, we will be starting our descent here shortly. अरे फोनिक बीजी गेम ऑफ थ्रोन्स वो खुद खेलते I am in the lead. Nice Akash bhai. Don't worry, Scooby is still in the lead. He is flying offline, don't forget. Okay. We are now starting our descent to our destination. Our brakes to 2. The weather. Good. Enjoy the rest of our flight. Ladies and gentlemen, we have just been cleared to land at our destination. Please make sure one last time your seatbelt is securely fastened. The flight attendants are currently passing around the cabin to make Okay guys, give me a minute. Give me like 5 minutes. I will be back. Okay.
Alright guys, I am back. 14 minutes to go. We are approaching that North Sentinel Islands and we have passed 10,000 feet. So let's turn on the landing lights. Everything else is looking good. Do we have enough separation? Phonic BG, Anish bhai, start maintaining the separation. We are just 14 minutes out, okay? So start maintaining the separation guys. Where did my B right back go? At 50 to 60 होते होंगे क्या? Okay, everyone will be ATC. ध्यान रखना. Okay भाई, okay. Scooby, I will noted. You will be the ATC. Hello Arpit bhai. I was away for 5 to 10 minutes. I am back now. Acha, yep. Bro, look where Tyler is. Tyler has taken an ATR, bro. Tyler has taken an ATR 72 or ATR something. Yeah, ATR 72. That's the reason why he is going to take a very long time to actually land. Hello AK gamers. How are you doing, brother? Welcome to the live stream. How are you? How old are you? I am 30, brother. I am 30. Knew it. Pro is gonna take 5 hours. What do you mean? Yep, true that. I am 30 and I was away for a bit. Hello Azim bhai. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. कैसे हो भाई? अरे ये 14 years नहीं रहे 30 years को अनीश भाई किधर 14 साल का बता रहे हो? Actually he is born यार ये भाई केशव भाई. Hello केशव भाई. What's up? How are you? What's up? Can I join? I mean you can join. बट वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच इन 13 मिनट्स. अब कहाँ से ज्वाइन करोगे आप बताओ मेरे को केशव भाई. फ्रॉम वेयर विल यू ज्वाइन? वेरी नाइस. यस आई थिंक ही वॉज बॉर्न 1 hour अगो. अरे बस रे भाई बस अभी उसने पूछा उसका जवाब है 30 का हो भाई 30 का. 1 hour अगो बॉर्न होके सीधा फ्लाइंग करना चालू किया ना. लाइव स्ट्रीम मैंने ऐसे ही चालू कर दिया ना. I am over North Sentinel. Pray for me. All the best, Akash bhai. All the best. Made it safely. Nice. Beautiful. See. Navraj and Anish bhai. If you guys want me to capture your landing, you will have to do a go around. If not, then I will do a go around. So let me know whether you guys want to capture your landings or not. I think that is Oliver. Nice. That is a good one Akash. But at least fire torches can be seen. कि हाँ भाई कुछ तो आ रहा है. Something is coming towards me. Just going to increase the speed a bit so that we do not enter the wave pattern. Daily dose of Akash folds, of course. Sorry. Navraj bhai, you are at 22,000 feet. Wow. Arey, there is Shamil bhai from our VA. Flying to where? Flying to Taipei. RCTP. Nice. He has done a very, very long flight. He flew all the way from Brazil into, where did he go? Yeah, he flew all the way from Argentina, I guess. Argentina to, I think he might have stopped somewhere over here for refueling and then on his way to Taipei. Nice. A very, very long flight though. Navraj is entering the holding pattern, so is Akash. And Oliver is trying to follow Akash, providing him the escort service in an
SR-22. Nice. Uh, by good luck, don't get shot down by mighty North City Islander Air Force. I deployed countermeasures to survive. Very good. Don't worry. Now we are flying over the Sentinel Islands. Beautiful. Let's hope that we don't run into any issues. This is our normal route, lol. Yup, exactly. Deploying flares. Deploying flares. Wow, beta, wow. Nice. Yeah, we can never go to this island, but at least we can see in the flight simulator. That is good. That is Navraj. Hey, Navraj. Don't fly into me, huh? Oliver left you, Akash bhai. Oliver is like, this guy is not going to land, he's going to hold. I will rather escort someone else. Glam is a better option to escort to the runway rather than Akash bhai. कुणाल भाई मेरा भी कैप्चर करना आ रहा है. ऑफ कोर्स सुबेश भाई, आपका लैंडिंग कैप्चर करेंगे हम, डोंट वरी. लेकिन थोड़ा भगाओ. बहुत आराम से आ रहे हो सर आप. थोड़ा सा भगाओ, बस थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं. एक काम करो, मत भगाओ सुबेश भाई, मत भगाओ. मे भी मेरे को गो अराउंड करना पड़ सकता है, तो एक काम करो, कुछ मत करो, जैसे आ रहे हो वैसे आओ. अनीश भाई, वाई सो स्लो? By the way, I survived the islands, for your kind information. लगता है मेरे को होल्डिंग पैटर्न में एंटर मारना ही पड़ेगा. चलो एक आई विल एंटर वन होल्डिंग पैटर्न सो दैट आई विल गेट sufficient amount of separation with Captain Anish, at least 4-5 nautical miles of separation with Captain Anish, and then we will resume our normal flying pattern. So let's enter one holding pattern. Who's this? Captain DP, you might have to do a go around. You are a bit too close. In the meantime, let's collect the ATIS information. अरे अनीश भाई ने भी गो अराउंड मार दिया. क्या अनीश भाई, किधर गो अराउंड मार रहे हो यार? पहले बोलते गो अराउंड कर, होल्डिंग पैटर्न में एंटर कर रहे हो, मैं निकल जाता. मैं होल्ड किया क्योंकि आप स्लो चल रहे थे. अरे यार, अरे भाई, करता हूँ अनीश भाई, करता हूँ लैंडिंग कैप्चर करता हूँ. मैं होल्डिंग पैटर्न में गया ये सोच के कि अनीश भाई बहुत स्लो जा रहे. अरे कोई नहीं. फोनिक बीजी, एंटर अ होल्डिंग पैटर्न, नो प्रॉब्लम. यू एंटर वन मोर होल्डिंग पैटर्न, आई विल ओवरटेक यू.
अरे मेरे को क्या पता, इसलिए आप स्लो चल रहे हो। चलो कोई नहीं, अभी 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 मैं जाता हूँ सीधा लैंडिंग पे। हेलो हेलो केशव भाई। यस ही इज कमिंग फॉर यू आकाश भाई। Okay, exiting the holding pattern, and now let's continue our flight. Continue on our flight plan. क्या आज एक ही फ्लाइट होगी? यस केशव भाई, आज एक ही फ्लाइट होगा। Alright, 11 nautical miles out. Let's start lowering our flaps. Holding over North Sentinel Islands. Tribes. Dragon is circling the island. Shoot. Lol. अरे रे रे रे। Okay, going to flaps 15. Captain DP has turned for the finals. Okay, perfect. So that in that case I should be able to land safely and successfully. Captain DP would be able to vacate the runway before I touch down, so that is perfect. भाई वो अभी भी गाला कर रहे हैं, तुम एक्यूजिशंस मत करो उन पर। गुड वन स्कूबी, गुड वन। लॉल। Okay, let's start. Let's go to flaps 25. Uno reverse. First time Akash bhai is like, phew. Finally, Phonic BG is scared of me. Alright, let's go flaps to 30. Alright, establishing on the localizer. So we will wait till we are 6 nautical miles out before we request for a landing clearance. Let's turn on the hood and let's go flaps to 40. अरे अनीश भाई, होल्डिंग पैटर्न में नहीं जा रहे हो क्या?
Bro, I'm gonna file the report. Who the hell is flying inside? Arey, that is Oliver, bro. That is Oliver. He is just escorting everyone to the runway. अरे वो बीच पे नहीं आ रहा भाई, वो एस्कॉर्ट कर रहा सबको रनवे तक जाने के लिए. कुछ मत करो बेचारे के साथ, करने दो. वो बस ऐसे ही साथ में आके एस्कॉर्ट करके रनवे तक जाके फिर गो अराउंड कर रहा हो. Alright, flaps full, spoilers on, brakes to 2. Everything else is looking good. Captain DP is almost about to touch down, so that is enough amount of separation. So now we can ask for our landing clearance. Golf 611, good day. Full established runway 04. Sierra Golf 611 Tower. Good day. Wind 0 degrees, 0 knots. Clear to land runway 12. Clear to land runway 04. 2500, gears down. Alright, Captain DP is on the ground. Yeah, he should be able to vacate the runway. अरे केशव भाई, welcome sir, welcome. Since Andaman and Nicobar Island Port Blair are a military airport, Oliver, the chief is just checking if everyone has windows down. They actually put windows down IRL. Oh, okay, is it? करता हूँ फोनिक वीडियो एकदम फटाफट वेकेट करता हूँ मैं. जितना फटाफट मैं कर सकूँ उतना फटाफट वेकेट करूँगा. बस थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा देता हूँ, चलो आपके लिए. Okay, let's get inside the cockpit and let's prepare for landing. I am watching you, Kunal bhai, in air cam mode. Nice, very good. Check. Continue. Beautiful touchdown, beautiful. Perfect. 60 knots, reverser stored. And let's continue on this runway. Let's vacate ASAP. Golf 611, exit runway at first left turn. Report when runway vacated. Roger. Turn left at nearest exit. Minus 140 feet is your prediction. Yep, let's see what we get.
All right, let's quickly vacate here. Sierra Golf 611 runway Sierra Golf 611 tower. Please contact ground on 118 And let's try to capture the landing for नवराज. अरे यार नवराज, आप टच डाउन मार भी दिए क्या? ground कैसे कैप्चर करूँ, इतना नज़दीक हो आप. 8.101. नवराज ने टच डाउन भी मार दिया भाई. माई गेस इज -140 feet per minute. ओके ओके, ऑल राइट. यप, आई विल कैप्चर योर लैंडिंग. आकाश भाई, डोंट यू वरी. And Anish bhai, I will capture your landing too. That is Oliver. इतना कौन भाग के आता है? Alright, while we are waiting for Akash bhai, anyways, we will continue to wait. अरे केशव भाई, कहाँ रनवे पे एंटर मार दिए? रुक जाओ, ये लैंड कर रहा है आकाश भाई. आकाश और अनीश को लैंड कर जाने दो, फिर आपका टेक ऑफ कैप्चर करता हूँ केशव भाई मैं. ए ओलिवर ओलिवर ओलिवर, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टंट्स देयर फ्रॉम ओलिवर. फाइनली आकाश भाई इज डाउन. नाइस 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 आकाश भाई, नाइस, वेरी वेल डन. Beautiful. Now time to capture Captain Anish. Beautiful landing Anish bhai, beautiful landing. Very well done. Beautiful touchdown, beautiful landing. Nice one. अभी रुक जाओ केशव भाई, करता हूँ मैं आपका कैप्चर. टेक ऑफ किधर गए केशव भाई? टेक ऑफ कर दिए क्या? अरे आकाश भाई, मेरे पीछे ही खड़े रहोगे क्या? वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन. हाँ आकाश, वेरी वेल डन. यही उम्मीद थी मेरे को. Flaps up, spoilers down, TCAS to traffic advisory, hood off, APU on, eyes off, waypoint hood on, and landing lights off, strobe lights off, taxi lights on, and let's contact the ground and request for our taxi. Sierra Golf 6. Sierra Golf 611 ground. Roger. Continue taxi to gate. Okay, okay. Wilfred. Continuing taxi. भाई स्टॉल की स्पीड पे था -11. वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल. -11 feet per minute, वेरी गुड आकाश भाई, वेरी गुड. फोनिक बीजी, वेरी गुड. आ जाओ केशव भाई, आई विल कैप्चर योर टेक ऑफ नाउ. थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ मैं अनीश भाई के लिए और सबके लिए, और फिर आई विल कैप्चर योर टेक ऑफ. बस ठीक है इतना. अभी फर्स्ट आई विल कैप्चर योर टेक ऑफ एंड देन आई विल टैक्सी बैक टू द गेट्स. चलो लेट्स गो केशव भाई. हेलो केशव भाई, रेडी टू कैप्चर योर टेक ऑफ. भाई मैं भी भूल गए हो क्या? अरे नहीं भाई, पता है मेरे को आप हो करके. आपका भी लैंडिंग कैप्चर करूँगा.
अभी वो केशव भाई टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद आपका लैंडिंग कैप्चर करूँगा मैं। जब तक उनका टेक ऑफ हो जाएगा तब तक आप फाइनल्स पे आ जाओगे सुबेश भाई, तो आई विल कैप्चर योर लैंडिंग देन। चलो ओके भाई, बाय एवरीवन, इट वाज फन, यस एब्सोल्युटली इट वाज फन। थैंक यू स्कूबी फॉर द एटीसी सर्विसेज। आई विल सी यू टुमारो। नाइस वन केशव भाई, ब्यूटीफुल टेक ऑफ, ब्यूटीफुल डिपार्चर। आ जाओ सुबेश भाई, आ जाओ। ए हु इज ऑन गेट नंबर 2, कैप्टन डीपी, प्लीज डिस्कनेक्ट, प्लीज डिस्कनेक्ट कैप्टन डीपी, और एल्स स्कूबी चेंज माई गेट, चेंज माई गेट स्कूबी। अनीश भाई का कौन सा गेट है वो देखो और मेरा गेट चेंज कर दो, ऐसा रहेगा तो। अरे फोनिक बीजी, वो पीछे देखो सुबेश लैंड कर रहा है, क्या स्टंट। भगाओ फटाफट भगाओ। हाँ भगाओ भगाओ भगाओ, गाड़ी भगाओ अपना। पीछे सुबेश लैंड कर रहा है तुम्हारे तुम सीधा रनवे पे स्पॉट मार रहे हो फोनिक बीजी। मेरा भी गेट 2 है। अरे कोई नहीं, आई विल डिस्कनेक्ट, आई विल डिस्कनेक्ट एज सुन एज आई लैंड, डोंट वरी। एज सुन एज आई पार्क एट द गेट आई विल डिस्कनेक्ट। नाइस वन, ब्यूटिफुल टेक ऑफ नवराज ऑन द A380, वेरी वेल डन। अभी थोड़ा ऊपर भी उड़ जाओ। अरे स्कूबी ने मेरा गेट चेंज नहीं किया। अनीश भाई किसके लिए रुके हुए हो? नाइस वन सुबेश, नाइस वन, ब्यूटिफुल लैंडिंग, ब्यूटिफुल टच डाउन, वेरी वेल डन, ब्यूटिफुल लैंडिंग सर, ब्यूटिफुल लैंडिंग। अरे ओ अनीश भाऊ, ग्लैम कैन यू प्लीज डिस्कनेक्ट? Captain Anish is going to park on gate number 4, so Glam, can you please disconnect? थोड़ा आगे तो बढ़ो। बस बस बस, उधर ही रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो ग्लैम डिस्कनेक्ट करेगा, उसके बाद चले जाना। हाँ ठीक है, उसने कर दिया ना डिस्कनेक्ट, चलो। भाई किधर चले गए? गेट 4 था ना आपका।
कि गेट 2 है? अच्छा गेट, अरे गेट 3 है तो डीपी को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। कैप्टन डीपी प्लीज़ डिस्कनेक्ट। गलत गेट बता दिए ड्रिफ्टर के लिए बोल के, बेचारे को डिस्कनेक्ट करवा दिया। कैप्टन डीपी प्लीज़ डिस्कनेक्ट। अरे यार एक जन पुश। ओके, approaching the gates, let's go ahead and turn off our taxi lights. क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? हाँ, कोई मेरे अंदर से घुस के जा रहा है। क्या चल रहा है ये सब, क्या चल रहा है? क्या है ये सब? ओके, let's set the brakes to parking. Cabin lights on, dome lights on, beacon lights off, TCAS to standby, seatbelt signs off. Let's turn off our engines and let's take a look at our landing rate. Minus 140 feet per minute. Nice one, yaar. Akash bhai, that I think you guessed it right. I think you are bang on target at 140. Yup. Akash bhai said minus 140 feet per minute, and that's what this is. Minus 140 feet per minute. Bang on. Nice one, nice one. All right, let's quickly deboard our passengers and then let's make space for Subesh bhai. Cabin crew, prepare doors for arrival and cross-check. Yep. अरे कोई किधर क्या चल रहा है ये सब? क्या क्या देखना पड़ रही है बाबा रे बाबा. Okay, everyone, those who have completed their flight, please disconnect from the server. Please disconnect from the server, everyone who has completed their flights. Let me take a couple of screenshots quickly, and then I am going to disconnect and I am going to make way for you, Subesh bhai. Minus 277 feet per minute. Nice. अरे क्या चल रहा है, लोग एक दूसरे के अंदर घुसे जा रहे हैं भाई साहब. Okay, all right, I'm just going to go ahead and disconnect. I'm going to make way for Captain Subesh. So this is it. Everyone, those who have completed their flights, please go ahead and disconnect from the server now. I'm going to disconnect and make way for Captain Subesh. This is the last stunt that I'm going to capture for Navraj, and then that's it. Perfect. Good job, Captain Navraj. I'm going to go ahead and disconnect now for Subesh. And let's take a look at our takeoff and landing replay. सॉरी अनीश भाई, आपने बहुत लेट बोला मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए. Okay, let's enjoy our departure here out of Chennai. Let's take a look at our takeoff replay. I got ATC to change his gate. No, that's fine, Oliver. I just disconnected from the server. Alright, here is our departure out of Chennai. Beautiful. Let's change to runway view now.
Alright, let's change it up to runway view. Alright, let's enjoy our takeoff from this one more runway view, and then we'll take a look at our landing replay. V1. Rotate. Rotate. No tail strike, bro, no tail strike. There was no tail strike. Gear up. Where was a tail strike in this, Akash bhai? I will zoom in and I will show you. There was no tail strike in this. Yep, absolutely beautiful. There was this Oliver in the background as well. Look at this one more time, Akash bhai. There was no tail strike. Extremely zoomed in view of the landing replay for you. I don't think so there was. Where? Yep. Alright. Let's take a look at our landing replay now. Okay, let's enjoy this view. Okay, then there might be slight. There might be slight. I was unable to notice it. Maybe. Okay. If you say there was, then there was. Nice one. Beautiful touchdown. Beautiful landing into Port Blair. Minus 359 feet per minute. क्या बात है सुरेश भाई, वाह. Positive rate. Minimums. Yeah, I mean whatever it is, maybe there was. I was unable to see it. Maybe because of the center line, I was unable to notice the sparks. But okay, fine. If there were sparks, then it was. 20. 10. Alright, nice. Beautiful touchdown. Not on the center line though, but a beautiful, smooth, soft touchdown. Nice one. Nice one. Let's take a look at this from the passenger view, and then let's call it a day. Positive rate. Traffic. I have the feeling they came from engine 1. Maybe, yeah. Because we did take off and then we touched down back on the runway. It was like we gained 1 feet of altitude and then again we touched the runway and then we lifted off. So maybe that's the reason why there might be a spark. Maybe the engine or maybe the tail, whatever it is. Beautiful touchdown, man. Beautiful touchdown. Lovely. Okay, alright guys, so with that, let's call it a day. Thank you everyone for tuning into the live stream. It was an absolute pleasure having each and every one of you on the live stream today. And I will see you guys again tomorrow with another live stream. Tomorrow we will be flying from Toulouse to what was it?
Charles de Gaulle, Paris on the Beluga A300, and I will see you guys then. So until then, stay safe, take care, bye bye, and see you guys tomorrow. Bye.